औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम-ओ-अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से करंट अफेयर्स के सिलेबस को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। करंट अफेयर्स के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स और जनरल इश्यूज़। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स से 20% पेपर आता है, एक्सटर्नल अफेयर्स से 40% और जनरल इश्यूज से 40% पेपर आता है। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं वो मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। पॉलिटिकल अफेयर्स के सेक्शन में हमारे पास आता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान, कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड मिलिट्री रिजाइम्स, constitutional crisis in Pakistan, salient features of the Constitution of 1956, 62 and 73 and subsequent constitutional amendments। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में। नेक्स्ट पार्ट जो डोमेस्टिक अफेयर्स में है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स। इस सेक्शन में हमारे पास इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, performance of important sectors of economy, for example agriculture, manufacturing, services sector, trade imbalance, future of economy of Pakistan। ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक अफेयर्स में आ जाती हैं। थर्ड इज सोशल अफेयर्स। इस सेक्शन में ज़्यादातर फोकस होता है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, terrorism and extremism in Pakistan and how to curtail it, social stratification, women development etc। जितने भी सोशल इश्यूज हैं वो सोशल अफेयर्स में आ जाते हैं। सो पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में बेसिकली आगे 3 पार्ट्स हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। इनके अंदर फिर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं वो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया है। सेकेंड पार्ट जो करंट अफेयर्स का है वो है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या क्या आ जाता है? फर्स्टली पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर्स में इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, रशिया है। इनमें अब आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है? इंपॉर्टेंट एरियाज टू कवर इन दिस सेगमेंट इंक्लूड आर वाटर इश्यूज विद इंडिया, ट्रेड विद इंडिया एंड चैलेंजेस, इंडस वाटर ट्रीटी, history and future of Pak-India relationship, the history of Pakistan-China relationship, the history of Pakistan-China relationship, China-Pakistan economic corridor, impact of CPEC on the economy of Pakistan, pros and cons of CPEC, challenges regarding CPEC, the history of Pakistan-Afghanistan relationship, Pakistan-Afghanistan relationship in the backdrop of war on terror, post 9/11 scenario, the future of Pakistan-Afghanistan relationship, the history of Pak-Russia relationship in context of the Cold War, Pakistan-Afghanistan water agreement, Pakistan's role in the Afghan peace process, CPEC and changing geopolitics vis-a-vis Pak-Russia relationship, new strategic relationship between Pakistan and Russia and the future of Pak-Russia relations। पाकिस्तान के नेबर्स के साथ जो रिलेशंस हैं उसके अंडर आपने इन तमाम टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट पोर्शन एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं आपने? हिस्ट्री ऑफ पाक यूएस रिलेशंस, प्रोज एंड कॉन्स पाक यूएस रिलेशंस इन पोस्ट 9/11 सिनेरियो, पाक यूएस रिलेशंस अंडर ट्रंप एंड बाइडेन रिजाइम। थर्ड पार्ट है जो पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में वो है पाकिस्तान रिलेशन विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? यूनाइटेड नेशंस, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। So focus on the role of UN in resolving issues related to Pakistan or South Asia, Pakistan's contribution to the UN, especially peacekeeping missions, India's bid regarding permanent membership of UNSC and challenges for Pakistan, SAARC and its role, making SAARC an effective regional organization, ECO and its role in regional politics, role of OIC and challenges and reasons for failure in uniting the Muslim world, OIC and the Middle East crisis, WTO, World Trade Organization, function of WTO, various bodies of WTO, agreements under WTO, impacts of WTO on world's economy, WTO and Pakistan, impact of WTO on economy of Pakistan, FATF and Pakistan, the impact of being in the grey list, the role and remit of the World Health Organization and the pandemic। ये तमाम टॉपिक्स आपने कवर करने हैं अंडर पाकिस्तान रिलेशन विद रीजनल एंड
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट पार्ट जो पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में है वो है पाकिस्तान रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड। इसमें कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? ईरान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। दिस इंक्लूड्स द हिस्ट्री ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, गैस पाइपलाइन, सी पैक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाक ईरान रिलेशंस, future prospects of Pak-Iran relations, the recent Turkey-Pakistan increasing defense ties। यहाँ पर आपके दो पोर्शंस कवर होते हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स और पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। थर्ड पोर्शन जो करंट अफेयर्स में है वो है ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज में फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। इसको आपने किस तरह से कवर करना है? थ्रेट्स टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आर्मामेंट्स, लिंगरिंग इश्यूज पोजिंग थ्रेट टू ग्लोबल पीस। Next problem is international political economy, the capitalism and its future, mercantilism, North-South divide, the role of IMF and the World Bank, commonalities in the social, political and economic structures of developing countries. Next is human rights violations in the world, the role of the Western countries and the UN in preventing human rights violations. The next global issue is environmental issues. The global warming, Kyoto Protocol, Paris Climate Agreement, global warming and its impact on Pakistan. Terrorism and counter-terrorism, global war on terrorism, impact of global war on terrorism on social, economical and political aspects of Pakistan. AF-Pak policy and its critical analysis. Then is global energy politics. The current oil price and their impact on the instability of the Middle East region, petro wars in the Middle East region. Next topic of global issues is nuclear proliferation and security, Non-Proliferation Treaty, the nuclear deterrence in South Asia, Pakistan's stance on NPT, the comparison of Pakistan and India nuclear and ballistic missile program and capability, Cold Star Doctrine and Pakistan's response. Cooperation and competition in Arabian Sea, Indian and Pacific Oceans. इनमें जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं उनमें ग्वादर पोर्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, चाइना's string of pearls, China's growing influence, South China Sea and Indian Ocean. Next is Millennium Development Goals, the details of MDGs, analysis of the implementation of MDGs. How successful has MDGs implementation been? Pakistan and implementation of MDGs, the challenges in the way of MDGs and the way forward. The Sustainable Development Goals. These topics are to be covered under Millennium Development Goals. Next global issue is globalization. अब globalization को आपने कैसे कवर करना है? What is globalization? Factors behind globalization, positive and negative aspects of globalization, impacts of globalization on social, cultural, economic and political aspects of Pakistan, globalization and the COVID-19 pandemic, Middle East crisis, Arab Spring, the roots of Middle East crisis, external and internal factors, precipitation, impact of Middle East crisis in Pakistan, the role of middle powers in the Middle East imbroglio, कश्मीर इशू। इस इशू का आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है, यूएन का क्या रोल है, कश्मीर स्टेटस आफ्टर 5 अगस्त 2019, hindrances and steps taken so far in resolving the issue, Pakistan's new political map. Palestine issue, history of Palestine issue, the Arab-Israel wars, impact of new Israeli settlements on Palestine conflict, steps taken for resolution of Palestine issue, Trump's peace plan on Palestine's Israel's relations in the Muslim countries and impacts on Pakistan, the challenges in the way of peaceful settlement of the Palestine issues. आपने कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, सो आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप सो यू लाइक इट। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप, आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फेलोज। Kindly subscribe my channel, also press the bell button so that you can get the notification of coming videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.